Cell of Delhi Metropolitan Education. I, Parul Grover, Assistant Professor, DME Management School, welcomes you to the Toppers Speak webinar series, which is especially designed to help the board aspirants of this year. My co-host for the day is Ms. Shanu Jain, Assistant Professor, DME Management School. Thank you, ma'am, for your support. We have with us Dr. Swati Jain, Head Outreach Cell of Delhi Metropolitan Education. Welcome, ma'am. Now, this entire day is dedicated towards guiding the board aspirants as to how to go about the board examinations and how to excel in those. For this, we have divided the entire webinar series as per the three streams, namely humanities, science, and commerce. We have toppers from each of these three streams who will be sharing their success mantra with you all. So right now, from the science stream, we have Mr. Mukul Jain, who is the topper from Amity School, Vasundhara. Welcome, Mukul, and congratulations. We have Miss Sanskriti, who is the topper from IPS Indrapuram. Welcome, Sanskriti, and congratulations to you too. We also have with us Mr. Anant, who is the topper from St. Thomas School, Indrapuram. Welcome, Anant, and congratulations. I would first like to invite Mr. Mukul Jain to share his success story and give his guidance to the upcoming batch of 2020 12th. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible. You can share your screen also. Ma'am, is the screen visible? Yes, it is. Please put it on slideshow mode. Sure, ma'am. Yes, thank you. That's great. You can start now, Mukul. So, good afternoon, everyone. I am Mukul Jain. I studied from Amity International School, Vasundhara Sector 6, and I got 98.2% in boards. I'm from science stream, and I'm currently at IIT Indore doing BTech Computer Science. Following were my subjects. They were English, Physics, Chemistry, Mathematics, and Computer Science. Now let's start with English first. We have three parts in English, namely reading part, writing part, and literature part. So in the reading part, as we know that note making has been deleted this year, so we have only reading comprehension. So what I would suggest is that for reading comprehension, you should read the title and the question of the passage first. It helps to tell you what the passage is all about, and while you are going through the passage, the questions will be in your mind and it will help you in attempting the questions correctly. So after doing that, read the passage thoroughly and attempt those questions. In the writing portion, as we know that longer writing portions such as debate and speech have been deleted. So for the rest, they are usually the short writing portions such as notices, advertisements, or article or reports. So for those, you should learn the format correctly and practice it very well, because format contains marks and it is very important that you do it correctly. Also, you should memorize certain quotes. They should be from general topics so that if any question comes to you in exam, you can write a quote. A quote will help you making your written portion look attractive. So one example that I would give is, today's decision is tomorrow's destination. This is an ending quote and can be used in various topics. Also, you should memorize few attracting lines and words and some specific starting and ending lines. Like for example, a specific starting line for a letter to editor could be, through the column of your esteemed newspaper, I would like to bring the kind attention of the concerned authorities, like this. So these starting and ending lines will help you in writing the portion quickly and correctly. Next, we will move on to literature part. In literature part, while reading the chapters, you have to learn the important and specific lines of the chapters. You should notice the small details in each chapter. For example,
there was one chapter of Evans the Break. There are many small details hidden in those chapters, and if you grab them correctly, it will help you in understanding the story of the chapter well, and will also give you matter to write in your answers. So some general tips for English would be that you should not use very hi-fi vocabulary, because you don't know where your paper will go for checking. So like if it goes to a very rural area and you have used vocabulary which is even beyond the capacity of the teacher, he may cut marks. So you should use usual vocabulary. And one suggestion that I would give is that the vocabulary should be well within and should not be very hi-fi. Also, English paper, as we have seen, is very long. So memorizing those specific lines will help you in answering those questions correctly. Next, we will move on to chemistry. As we know, most of the memorizing portion has been deleted, which is a very good news for you. And the 30% of the syllabus has been deleted. So you are left with only 70% syllabus. Now the problem is that since the syllabus has been reduced, you will have the questions will be of higher difficulty, and this is what is expected, that these questions will be of higher difficulty. So in answering those questions, you will have to get your concepts very clear. So your concept should be very clear, and you have to read the NCERT very carefully, because most of the questions are from NCERT only. Next is like organic chemistry. In organic chemistry, the reactions are very important. So, and the name reactions are especially more important. So you have to memorize the names and spelling of those names too. So memorize them correctly, and you have to solve many questions in organic chemistry. You don't know from where the question can be. Also, what I have seen is that people tend to not do IUPAC nomenclature very carefully, but a question of IUPAC nomenclature is in all the papers, in all the previous papers. So you should do it very carefully. Next would be write those reactions carefully and write the names of reactants and products. If you know them, you should always write them. Next will be physical chemistry. In physical chemistry, there is not much to tell, but only 2 or 3 things I would tell is that you should solve different types of questions in physical chemistry, and you should get your concepts clear and do the numericals very carefully. I would be discussing in later parts how you can do numericals. So next would be inorganic chemistry. In inorganic chemistry, we know it is a purely memorizing part, and मैंने ये देखा है कि बच्चों को मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, और मुझे भी हुई थी. तो उसके लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या रिएक्शंस हैं, आप उन्हें स्टिकी नोट्स पर लिख लीजिए, और स्टिकी नोट्स को आप अपनी स्टडी टेबल के सामने जो वॉल है उस पर लगा दीजिए. तो इससे ऐसा होगा कि आपकी नज़र उन पर रोज जाएगी, और इस वजह से वो आप आसानी से उन्हें मेमोराइज कर पाएंगे. और एक नेमोनिक्स भी आप यूज कर सकते हैं उनको मेमोराइज करने में, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में निमोनिक्स यूज करते ही हैं, वैसे ही आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के निमोनिक्स बना लीजिए. नेक्स्ट वुड बी दैट यू शुड डू पास्ट क्वेश्चंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, because they are very important. In inorganic chemistry, the questions are usually what have already been asked last year, so they are very important. Also, like in chapters such as coordination chemistry, where you have to make diagrams, you should make neat diagrams. In physics, as we know, the last year's paper was equivalent to a JEE paper, and we saw that the MCQs were of very high level. And since this year the syllabus is deleted, we can assume that
the questions will be of a higher difficulty this year too. So for that, you should get your concepts clear and read theory with understanding. And what I have experienced is that memorizing formulas not clearly will and can lead to आप उससे अपने मार्क्स को लूज कर सकते हैं. तो इस वजह से आपको जो अपने फॉर्मूलाज हैं उन्हें अच्छे से मेमोराइज करना है और हर सिंबल का एक मीनिंग जो होता है उसको भी अच्छे से याद रखना है. You should read NCERT very well and you have to make neat diagrams. Remember about the arrows, symbols and other notations. जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के और ऑप्टिक्स के जिसमें आपको डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, तो उसमें एरोस का ध्यान रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें भी बच्चे मार्क्स लूज करते हैं. और MCQs को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये नहीं बता सकते कि उनका लेवल कितना होगा. So next we have mathematics. In mathematics, I would suggest that you do questions and proofs given in the NCERT, and same as for physics, that you should memorize formula clearly. And one more thing that I would suggest is write answers stepwise. मैंने ऐसा देखा है जैसे कि बच्चे या मैं खुद भी हम ऐसा करते हैं कि 2 स्टेप्स को एक ही लाइन में लिख देते हैं. अब अगर ऐसा हुआ कि मार्किंग स्कीम में उन दोनों स्टेप्स के 0.5 मार्क्स थे, तो होगा क्या, शायद टीचर उन दोनों स्टेप्स को एक ही स्टेप माने और सिर्फ 0.5 लिख दे. तो आप टीचर की गलती से भी अपने 0.5 मार्क्स लूज कर सकते हैं. तो इस वजह से यही सजेशन होता है कि स्टेप वाइज आप आंसर्स लिखिए अलग अलग लाइंस में, जिससे कि आप कहीं मार्क्स ना खोएं. आई एम आस्किंग यू टू प्रैक्टिस द प्रूफ्स बिकॉज लास्ट ईयर के पेपर में एक मेरे को क्वेश्चन आया था. इट वाज अ प्रूफ गिवन इन द NCERT, बट मैं उसको पढ़ के नहीं गया था. तो हुआ क्या कि मुझे वो थोड़ा सा अलग लगा क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाया और मेरे सारे आंसर सही भी हुए. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रूफ्स को भी प्रैक्टिस कीजिए. सो हियर इज द न्यूमेरिकल पोर्शन. न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसा है कि आप उन्हें नीटली कीजिए. आप एक रफ स्पेस बना सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए. तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि टीचर ये देख ले कि आपने रफ स्पेस में तो सही किया है लेकिन आपने असली अपनी आंसर शीट में कॉपी गलत किया है, तो हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं. ऑल्सो अपने आप आंसर्स स्टेप वाइज लिखिए और ये आंसर्स ऑर्डर्ड मैनर में होने चाहिए, जैसे कि गिवन, टू फाइंड या प्रूफ, या फिर इन द एंड सॉल्यूशन. While revising, what I would suggest is take care of the units. जब आप अपना एक बार पेपर कर लें तो एंड में सब ये देख लें कि आपने कहीं यूनिट्स तो नहीं छोड़े लिखने, क्योंकि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी न्यूमेरिकल में, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री या चाहे मैथ्स. तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. और अपने फाइनल आंसर के अराउंड एक बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि एज अ जो मैंने सुना है कि टीचर्स कुछ ऐसा चेक करते हैं कि वो सबसे पहले फाइनल आंसर देखते हैं. वो ये देखते हैं कि अगर फाइनल आंसर ठीक है तो वो फिर जो स्टेप्स हैं उन्हें इतना ध्यान से नहीं पढ़ते और आपको फुल मार्क्स दे देते हैं. इसलिए आपको अपना जो फाइनल आंसर है उसके अराउंड बॉक्स बनाना चाहिए जिससे कि वो हाईलाइट हो सके. और शायद आपने अगर स्टेप्स में कुछ गलती भी की हो और अगर आपका आंसर ठीक हो गया तो शायद आपको फुल मार्क्स भी मिल जाए. नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसका पिछले साल पेपर कैंसिल हो गया था. इन कंप्यूटर साइंस टेक केयर ऑफ द सिंटैक्स, लाइक यू हैव SQL and Python, so you should take care of the syntax. It is very important. And आपकी एक छोटी सी सिंटैक्टिकल एरर से आपका पूरा कोड गलत हो जाता है, तो उसको बहुत ध्यान से लिखिएगा. और अपने जो कमेंट्स हैं उन्हें भी ध्यान से लिखिएगा. ये कमेंट्स आप जानते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन ये आपके जो टीचर जो चेक कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू शुड राइट कमेंट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर एंड you may get very good marks for it.
Also you should give descriptive names to variables. Like for example हमें एक वेरिएबल बनाना है अकाउंट नंबर, तो आप उसको एक नाम जो वेरिएबल को देना है वो n ना कि n दें, बल्कि आप उसे दे दें अकाउंट अंडरस्कोर नंबर। तो उससे जो टीचर है उससे समझ में आ जाता है कि यही वेरिएबल है और आसानी होती है कोड रीडेबिलिटी में। We also know that computer science also has memorizing part like data computational, etc. So for that I have already discussed what you can do. You can either make sticky notes or you can use mnemonics. But memorizing part में आप उसको पहले समझ लीजिए अच्छे से और उसके बाद मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो बहुत आसानी से मेमोराइज हो जाएगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कंप्यूटर साइंस का पेपर करने में। अब मैं सोर्सेस पर चलता हूँ। As we know that most of the questions come from the NCERT, so what I did was this site learncbsc.in, I would go and find the answer for NCERT solutions. So it made my life easier. And for questions such as MCQs, you can do NCERT exemplar. Next, as I have told you कि फिजिक्स के क्वेश्चंस मुश्किल हो सकते हैं और MCQs और मुश्किल हो सकते हैं, और वो शायद जेई लेवल्स के भी हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि HC वर्मा में उसकी थ्योरी पढ़ लें फिजिक्स की, बस न्यूमेरिकल्स शायद ना करें पर उसकी थ्योरी जरूर पढ़ लें क्योंकि HC वर्मा की थ्योरी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, फॉर पाइथन I would like to suggest for computer science Sumita Arora. It is a very good book. And उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप YouTube वीडियो से आप समझ सकते हैं, आपको बहुत आसानी मिलेगी और क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। Some general tips would be that write neatly, draw lines, leave gaps. जो अपने डायग्राम्स है उन्हें बड़ा बनाइए। As we all know कि पेजेस बहुत सारे होते हैं, तो आप उन पेजेस का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और क्लियर और बड़े डायग्राम्स बनाइए। प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चन पेपर्स, एज मैनी एज यू कैन, एंड प्रीवियस पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस देखिए जिनमें बच्चों ने 100 स्कोर किया है। जो आप सॉल्यूशंस जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उन टॉपर्स का राइटिंग पार्ट उन्होंने किस तरह से लिखा है, और आपको अपने जैसे आपका तरीका है लिखने का, आपको उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे कि आपका तरीका भी उनकी तरह हो और आपको भी 100 नंबर मिले। और आपको मार्किंग स्कीम भी एक बार देख लेनी चाहिए क्योंकि मार्किंग स्कीम इन पेपर्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस स्टेप्स पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं, क्या क्या कीवर्ड्स लिखने पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं, तो जिससे कि आप अपने जब आप पेपर करेंगे तो आप उन कीवर्ड्स को लिखना ना भूलें, उन स्टेप्स को लिखना ना भूलें। And listen to your school teachers, let them guide you, they have very much experience in this field. Next would be choosing of a pen. Well, since we all know that these papers are quite lengthy, तो जो मैंने किया था कि एक लाइट पेन चुना था जो मेरी स्पीड बढ़ाए और मेरी ब्यूटी ऑफ हैंडराइटिंग को भी बरकरार रखे। So I chose such a pen, and you should do that now because it will give you practice of writing with that pen, and you will not feel new while you are writing the exam with that pen, and it will work very well. आपकी जो फिंगर्स हैं वो accustomed हो जाएंगी उस पेन से लिखने के लिए। Next would be during the exam days you have to set your timetable carefully. अपना जितना आपको पढ़ना है, कितना कितना आपको पढ़ना है उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और टाइम टेबल सेट करिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। और यहाँ पे टाइम टेबल ग्लैंड भी कहना चाहता हूँ मैं, आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। यहाँ मेरा टाइम टेबल ग्लैंड से ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपका जो पेपर होगा बोर्ड्स का वो 10 to 1 होता है, और इस 10 to 1 में पीरियड में
आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहना चाहिए। अब अगर आपका रोज का टाइम टेबल कुछ ऐसा है कि आप 10 या 11 बजे तक सोते हैं एग्जाम डेज में, तो ऑब्वियसली आपका 10 से 1 बजे तक का जो पीरियड है उसमें आपका माइंड एक्टिव नहीं रहेगा। तो इस वजह से आपको जो अपना माइंड है वो एक्टिव करने के लिए जो भी आप पेपर्स करें उसको इसी टाइम इंटरवल 10 to 1 में करें। इससे आपको हेल्प मिलेगी और आपके माइंड को पता रहेगा कि मुझे कब एक्टिव रहना है। इससे जो आपको थोड़ी एंजाइटी होती है वो भी कम होएगी। और मतलब रोज अगर आप 2 से 3 पेपर करें तो मिनिमम एक पेपर 10 to 1 जरूर करें। ऑल्सो मैंने ये भी देखा है कि बच्चे कुछ कुछ क्वेश्चंस करना भूल जाते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट वी आर नॉट allowed to write on the paper, so you can just mark the questions you have done with a small dot, and in the end when you revise it you can see that if you have done the question or not. Also you should set self goals or targets and try to complete them every day. इससे जो आपका टाइम टेबल सेट है, जो आपके गोल्स हैं वो कंप्लीट होंगे और आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा और आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से पूरा होगा टाइम पर। तो आपको इस तरह अपना टाइम टेबल प्लान करना है, इस तरह अपने गोल्स और टारगेट्स रखने हैं कि आपका सिलेबस टाइम पे पूरा हो, आपको टाइम मिल जाए पेपर्स करने का। Don't procrastinate during exam days and eat a healthy diet, get enough sleep. Also you have to use the reading time very well of the paper because the reading time is very important. उसमें आप अपना पाथ डिसाइड करते हैं कि मेरा पाथ कैसा होगा पेपर करने का। उसमें आप ध्यान रखिए कि कैसा मैं पेपर करूंगा और उस पेपर को मतलब जैसे मेरी टेक्निक ये थी कि मैं पहले इजी पोर्शन करता था और फिर डिफिकल्ट पोर्शन पे जाता था। तो वाइल रीडिंग टाइम मैं ये देख लेता था कि कौन कौन से क्वेश्चन इजी हैं या कौन कौन सा सेक्शन इजी है जिससे मैं उसको पहले कर सकूं। और इस वजह से क्योंकि मैं इजी क्वेश्चंस को पहले करता था और मैं बहुत फास्ट कर लेता था उन्हें, तो मेरा काफी जल्दी पोर्शन कंप्लीट भी हो जाता था और एक मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता था कि हाँ मेरा इतना पेपर हो गया है, मेरे को बस इतना सही बचा है। तो वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि डू इजी क्वेश्चंस फास्ट एंड करेक्ट एंड डू डिफिकल्ट क्वेश्चंस स्लोली एंड केयरफुली। अगर आपको कहीं डाउट है पेपर में तो आपको अपने बेसिक्स पे जाना है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं। अपना जो पेपर है वो 2.5 hours में कंप्लीट करने की कोशिश करें so that you get an additional half hour for revision, and in that revision time you can see all your mistakes of units and boxes, and you can in that time you can correct those units, you can make boxes, you can underline the important portion, you can make lines after every answer. So revise your paper twice and very carefully. और अगर आपके पास टाइम हो तो उसके बाद भी कीजिए। आपको उन 3 hours का पूरा अच्छे से यूज करना है। लास्ट में मैं बस एक यही टिप देना चाहूंगा कि फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कि वो लोग जेई मेंस 3 बार देंगे बोर्ड्स देने से पहले, एज पर जो डेट्स आई हैं HRD मिनिस्ट्री से, कि जेई मेंस विल बी 3 times बिफोर गिविंग बोर्ड्स। तो उन जेई मेंस की प्रिपरेशन के दौरान जो बच्चे होते हैं और मैं भी सिर्फ पीसीएम पर फोकस करते हैं और इस वजह से उनका इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट जो होता है वो निग्लेक्ट हो जाता है। जो मेरे साथ हुआ था मैं ये बताता हूँ कि नवंबर एंड तक मेरा बोर्ड का सिलेबस खत्म हुआ और जनवरी में मेरा मेंस था, तो मैंने अपना पूरा जो जनवरी दिसंबर था वो डेडिकेट कर दिया जनवरी जेई मेंस देने में और उसकी पढ़ाई में। पर द प्रॉब्लम ये आई कि मेरी जो इंग्लिश नवंबर एंड तक थी और वही इंग्लिश जो जेई मेंस देने के बाद थी उसमें काफी फासला था ऊपर नीचे का। मैं नवंबर एंड तक काफी अच्छा था इंग्लिश में और जनवरी के जेई मेंस देने के बाद इतना अच्छा नहीं रहा था, तो मेरे को वापस अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। अगर यहीं पे मैं दिसंबर में प्रैक्टिस करता रहता तो मेरा इंग्लिश नहीं गिरती उस लेवल पे। सो यू शुड नॉट let your
those subjects get neglected. तो आप उन्हें प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलरली, या तो once in 2 days और once in 3 days, जिससे कि आप कुछ खोए ना उस सब्जेक्ट्स पर, और आपका जो लेवल है वो मेंटेन रहे, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और आप अच्छे से पेपर कर पाए. So in the end, all the best for your exams, and I hope you will do them well. Give your natural and read the questions very carefully and use the reading time well. So over to you, ma'am. Thanks, Mukul. That was actually an excellent advice from you. Very scientific one also, that if the paper is from 9 to 12, then your timetable also should support this time period where your brain is actually active during this time period. So excellent and very scientific advice. And I have noted this down also while preparing for my exams and everything. Now I'm going to do this. Even I have been a late sleeper and a late riser, but usually the exams are during the period of the hours of the examination. You are actually in the habit of being active. So excellent and very scientific, Mukul. Excellent, superb. I'm sure the students present here might have gained a lot from Mukul. And congratulations for being an IITN now. This batch, you're going to carry it forward with your life, throughout your life actually. So congratulations on that. Thank you, ma'am. Now I would like to call upon Miss Sanskriti, who is the topper from IPS Indrapuram. So Sanskriti, you can share your screen. Parul ma'am, in the meantime, please announce for the registrations and other links. Okay. Students, I'll be floating the registration link here. All those who have not registered for the webinars must do it now for getting the e-certificates. Okay. So I'll be floating the registration link here. Copy it and fill it. Ma'am, am I audible? Yes, you are. Oh, okay. And is this screen visible? Is this screen visible? Yes, it is. It is. Okay. So, hello everyone. I'm Sanskriti Singh from Science Stream, and I'm the topper of Indrapuram Public School, Indrapuram, Ghaziabad. And currently, I'm pursuing economics honors from Indraprasth College for Women, University of Delhi. Some of you may be surprised by the fact that I'm pursuing economics honors, but that purely because of my interest. And I would want you also be to take up your interest and do whatever you like. It will surely help you in yielding good results. Let us start. These are all the subjects I had in class 12. Physics, chemistry, mathematics, English, economics, and physical education as an optional subject. So we will start with physics. So first point I have mentioned here is thorough revision of past papers is required. The revision of past papers is very important because it helps you to make a mindset of how your paper would be going to. It will help you to understand how easy it would be for you, or at the same time how difficult it would be for you. So past papers are very, very important. Secondly, reading of NCERT is required for 1 markers. Although it won't help much in numericals, you have to refer to reference books. NCERT आपको न्यूमेरिकल्स में और लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन 1 मार्कर्स हमेशा अधिकतर NCERT से आते हैं और आप ऐसे एक्सपेक्ट भी करते हैं. तो हर चैप्टर NCERT से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग आंसर्स के लिए you can always refer to reference books. Third, questions may not be straightforward. Reading them 2-3 times is advised. हमेशा आपको क्वेश्चन सीधा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको ये करना है. आपको 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा
और फिर सोचना पड़ेगा कि हमें इस चैप्टर का ये टॉपिक लगाना है। तो एकदम से क्वेश्चन को पढ़ के नर्वस नहीं होना है, 2-3 बार क्वेश्चंस पढ़ें, फिर दे विल बी इजी। अगर आप 3-4 बार उन्हें पढ़ के समझ लेंगे कि आपको करना क्या है। एंड फोर्थ पॉइंट हियर इज अवॉइड सिली मिस्टेक्स, साइंस मस्ट बी यूज केयरफुली। जैसे कि चैप्टर्स ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स इसमें आता है, प्लस माइनस के साइन का बहुत ध्यान रखना है। आपके एक प्लस माइनस के साइन से आपका आंसर में अंतर आ सकता है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और यूनिट्स भी लिखनी है। हर आंसर के बाद आपको यूनिट लिखना इम्पोर्टेंट है, उसके भी मार्क्स होते हैं। And fifth point, have an overview in your mind of how you're going to attempt the paper. Don't write long answers for 1 markers. आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए आपके माइंड में, आप कौन सा सेक्शन पहले करोगे, कौन सा सेक्शन बाद में करोगे। और 1 मार्कर्स में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा टाइम 1 मार्कर्स में लगा सकते हो तो उसको एंड के लिए रखो, आप बाद में 1 मार्कर्स कर सकते हो। 2-3 लाइन के आंसर होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। फालतू में टाइम 1 मार्कर्स पे वेस्ट नहीं करना। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट हियर इज फिजिक्स पेपर इज द मोस्ट डिफिकल्ट अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स, यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। जैसे कि मुकुल ने भी कहा कि फिजिक्स का पेपर जेई के लेवल का आता है, तो बहुत लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और आप मेंटली प्रिपेयर पास्ट पेपर्स के रिविजन से होंगे। पास्ट पेपर्स आपको माइंडसेट प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे कि आपका पेपर कैसे होना चाहिए। आप एकदम से ब्लैंक नहीं हो सकते जब पेपर आपके सामने आए, तो आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए पास्ट पेपर्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। नाउ विल मूव टू केमिस्ट्री। Believe me, chemistry is the easiest one and it is easy to score a perfect 100. अगर हम PCM की बात करें तो केमिस्ट्री सबसे इजी पेपर माना जाता है और होता भी है। अगर आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर अ परफेक्ट 100. एंड सेकेंडली 95% to 99% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी इज मस्ट। अगर आप और कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ेंगे तो भी एनसीईआरटी काफी होती है। अगर 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है भी हैं तो भी आपके कंसेप्ट्स एनसीईआरटी से ही होंगे। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करी है, अच्छे से पढ़ी है, तो paper would be very easy for you. Thirdly, organic part is easy. Do not mug up things. Understand the procedure behind every equation. It will be very easy to remember. Organic बहुत लोगों को मुश्किल लगती है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है। आपको चीजें याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको उनके पीछे क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स यूज हुए हैं, कहाँ से ये इक्वेशन आई है। अगर आप ये रिमेम्बर करेंगे तो ऑर्गेनिक आपके लिए काफी इजी बन जाएगी। And paper presentation matters a lot. Support your answers with examples and equations. केमिस्ट्री में हम सबको पता है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं और कोई भी थ्योरी पेपर में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर्स करती है। अगर आपने सब कुछ टू द पॉइंट लिखा होगा, क्रिस्प लिखा होगा, तो टीचर को भी अच्छा लगेगा पढ़ने में और आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करेगा ये। और अपने आंसर्स को हमेशा एग्जाम्पल्स और इक्वेशंस के साथ सपोर्ट करें अगर इक्वेशंस उसमें कोई है। ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में इक्वेशंस होती हैं, और इनऑर्गेनिक में इक्वेशंस याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। और अगेन पास्ट पेपर्स आर वेरी यूजफुल। किसी भी पेपर में पास्ट पेपर्स यूजफुल होते हैं क्योंकि आपको बताते हैं कि पेपर कैसा आएगा। आप पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते पेपर कैसा होगा, तो पास्ट पेपर्स पिछले 10 साल के आपको बहुत हेल्प करेंगे। Now we move to mathematics. Practice, practice and practice. Being regular is necessary. मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही मंत्र है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी होगी और रेगुलर होना बहुत नेसेसरी है। अगर आप हफ्ते में रोज मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो एक भी दिन का गैप बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कवर अप करना। अगर आप रोज करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और लास्ट मिनट हजल बजल नहीं होगी। तो टू अवॉइड दैट प्रैक्टिस इज नेसेसरी
and it is the most scoring subject. अगर आपके सारे concepts clear हैं, सारे formula आपके tips पे हैं, तो where would you lose marks? So it is the most scoring subject. And thirdly, all the NCERT questions must be on tips. ज्यादातर पेपर आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस सारे आने चाहिए. एक आपका हर एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए विद स्टेप्स. अगर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से नहीं भी हैं डायरेक्ट, तो उसी कंसेप्ट पे होंगे, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थली, क्लैरिटी ऑफ एवरी स्टेप इन द आंसर इज द इम्पोर्टेंट थिंग. आप सबको पता है कि स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप का मार्क्स होते हैं, तो आपके पेपर में हर स्टेप की क्लैरिटी होनी चाहिए. अवॉइड स्किपिंग स्टेप्स. I would give you an example. There was a girl with me. She did everything right in math paper. All the answers were right. Because of skipping steps, she got 85 of 100. Just because of skipping steps. So do not skip steps because of there is step marking. And fifth, do not waste much time in doing 1 mark questions. Again, 1 mark questions में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे. 1 मार्क अगर आपको आता है तो आपको पहली बार में ही देख के आना चाहिए. अगर नहीं आता है तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए. और डू नॉट मेक शॉर्टकट्स. जैसे कि 4th स्टेप में बताया, हर स्टेप की स्टेप मार्किंग होती है, तो शॉर्टकट्स अवॉइड करें. जो मेथड एनसीईआरटी में ज़्यादातर वही प्रेफर करें. जैसे कि आप जेई वगैरह में प्रिपरेशन करते हैं, तो दे टीच यू शॉर्टकट्स टू रीच टू द आंसर क्विकली, बट अवॉइड देम डूइंग इन बोर्ड्स. And last, figures must be made wherever necessary and must be clear and every point must be marked. जैसे कि कोनिक्स चैप्टर है जिसमें 3-4 सर्कल्स वगैरह, पैराबोला वगैरह आता है, या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग. आपका हर पॉइंट मार्क होना चाहिए ग्राफ पे, बिकॉज ग्राफ्स हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दोस टाइप्स. अगर आपका ग्राफ सही बना है तो यू विल रीच टू द आंसर वेरी क्विकली. Fourth, English. It is important to work on your writing and build a strong vocabulary. आपकी राइटिंग एट्रैक्टिव होनी चाहिए. इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी की जरूरत है. और कोट्स भी आप लर्न कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट इधर है, जैसे कि लर्न कोट्स दैट कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. ऑब्वियसली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स विच कैन कम. ऐसी कोट्स याद करें जो बहुत सारे टॉपिक्स में कवर हो जाए, आपको अलग अलग ना याद करना पड़े. जनरल होनी चाहिए वो कोट्स की यू कैन यूज देम एवरीवेयर. एंड रिमेंबर ऑल द फॉर्मेट्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आपको फ्री मार्क्स मिल जाएंगे, बट एट द सेम टाइम अगर याद नहीं है तो आपके फालतू के मार्क्स कट भी सकते हैं. तो बहुत इजी चीज है. ऑल द फॉर्मेट्स should be on your tips. And fourth, keep check of the word limit. Don't exceed it. In the writing skills, often word limit is mentioned against the question, तो keep check of it. Don't exceed it. Teachers frustrate हो जाते हैं ज़्यादा पढ़ के, तो word limit maintain करें. और लर्निंग फैक्ट्स फ्रॉम द चैप्टर्स कैन फेच यू मोर मार्क्स. अगर आप ईयर, लोगों के नाम या कोई भी पर्टिकुलर थिंग याद रखते हैं तो वो आपका क्वेश्चन आंसर अट्रैक्टिव बन जाता है और it will fetch you more marks. And presentation matters a lot in this paper. So use pencil and scale, draw a line after each question, and remember all the formats and make them correct. So to present English paper is very important, and this will surely fetch you more marks. And now comes economics. अगर आपके में से किसी के पास इकोनॉमिक्स है तो listen to it. Graphs form an important part of macroeconomics. Focus on them. More than half of the macroeconomics is based on graphs. आपको उसमें फोकस करना, ज़्यादा फोकस करना चाहिए. वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा. और शॉर्ट फॉर्म्स ना यूज़ करें. बहुत लोग इनकम की जगह वाई यूज़ करते हैं, प्राइस की जगह पी, क्वांटिटी की जगह क्यू. तो इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट द होल वर्ड and do not use short forms.
एंड रिमेम्बरिंग ऑफ फैक्ट्स इज मच इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी. इस बार भी 1 मार्कर्स में ईयर्स पूछे गए थे, तो इंडियन इकोनॉमी के फैक्ट्स रिमेम्बर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. हर एनसीईआरटी विल हेल्प यू इन इट. हर चैप्टर के नोट्स बनाए और अलग से फैक्ट्स एक जगह लिख ले. देयर आर मेनी फैक्ट्स, ईयर्स होंगे, लोगों के नाम होंगे, किसने क्या किया, एंड the schemes you have to remember that. And reading newspaper can help you while answering questions of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में आपका आंसर जितना फैक्ट्स रिलेटेड होगा, जितना रिलेटेबल होगा करंट स्ट्रीम से, वो that will make your answer more presentable and will fetch you more marks. So you can read newspapers for Indian economy and keep check of science in macro numericals. प्लस और माइनस का बहुत ध्यान रखना है मैक्रो के न्यूमेरिकल्स में, कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स में माइनस आएगा, प्लस आएगा. सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स, जीडीपी वगैरह में माइनस और प्लस का बहुत ध्यान रखना है. एनसीईआरटी वोंट हेल्प मच इन मैक्रोइकोनॉमिक्स. मैक्रोइकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ नहीं है. अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है कि सिलेबस में क्या है, तो वो भी आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस है. बस आप एक बार देख सकते हैं कि जो आपके सिलेबस में है वो चीजें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस है, तो एनसीईआरटी ज्यादा हेल्प नहीं करेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में. बट श्योरली इंडियन इकोनॉमी में एनसीईआरटी इज मस्ट एंड इट इज इनफ, आई वुड से. एंड प्रेजेंटेशन विल श्योरली मैटर. जिस भी पेपर में न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं होते, थ्योरी होती है, उसमें प्रेजेंटेशन मैटर करती है. तो कीप योर पेपर नीट एंड क्लीन टू avoid cutting things, and this will fetch you more marks. And these are all the books I referred to for physics, NCERT and SL Arora. As I said, NCERT is required for 1 markers, and it won't help much in numericals and long answers, so you need a reference book. It can be SL Arora, and HC Verma is also very good. And for chemistry, NCERT is must and is very important. You can refer only to NCERT, but when you want to gain more knowledge or get your concepts more clear, you can read two reference books. I read Pradeep for this purpose. And for maths, NCERT too is very important. You need to know each and every question of NCERT by heart. An exemplar would help you. There are times when you get questions from exemplar, and R.D. Sharma or R.S. Agarwal may help you. And fourth comes English. CBSE books are compulsory for the text. You have to read them. And as I said, remember facts and read all the chapters by heart and several times. This will help you learn the lines from the chapters. And I used Arihant All-in-One, which is good for writing skills and reading comprehensions. And fifth, economics, I referred to NCERT. As I said, NCERT won't help much in macroeconomics, but would help in Indian economy. And Sandeep Garg is good both for macroeconomics and Indian economy, and TR Jain could also help you with the same purpose. And these are some general tips that you must follow whole throughout the year. And these are, set your timetable. Timetable is very important. हाँ, डिफिकल्ट होता है हमेशा इसे फॉलो करना. सेट तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इट विल श्योरली हेल्प यू गेन मार्क्स. एंड फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट. अधिकतर साइंस वाले लोग जिनके पास पीसीएम पीसीबी होता है, वो फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं, बट दीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट. बोर्ड्स में तो सब आपका इक्वल वो फॉर्म करेंगे, तो दोनों सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डोंट स्टडी कंटिन्यूसली फॉर मोर आवर्स, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन. लगातार 4-5 घंटा पढ़ना आपको हेल्प नहीं करेगा, तो 2-3 घंटे पढ़े और बीच में ब्रेक्स ले, वो चीजें करे जो आपको अच्छी लगती है. बीट सिंगिंग, डांसिंग, वॉचिंग मैचेस, एनीथिंग. फॉलो, स्पेयर टाइम फॉर योर हॉबीज and bring positivity in your surroundings.
अपने अपने आसपास वो चीजें रखें जो आपको अच्छी लगती है. This will surely make your make a good mindset and bring positivity to you, and it will surely help you make a mind for studying. And don't waste much of your time on social media बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है. मैं आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल ही ना रहें, सी इट, बट बहुत कम टाइम के लिए, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करें इस सब पे. These are tips for a day before exam. एक दिन पहले की पढ़ाई तो won't help you much, तो उस दिन ज्यादा ना पढ़े, अपने आप को फ्री रखे और उन चीजों में इन्वॉल्व करे जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि एक माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कि अगले दिन पेपर है, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करेगा, पूरे साल भर की पढ़ाई काम आएगी. एंड कीप योर नोट्स रेडी, रिवाइज देम 2-3 टाइम्स. आपके पास हमेशा नोट्स रेडी होने चाहिए कि आप 15-20 मिनट में उन्हें देख ले, तो एग्जाम से पहले वाले दिन आप 2-3 बार अपने नोट्स देख सकते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह याद कर सकते हैं. एंड डू व्हाट यू लव टू डू, जैसे कि बताया. एंड डू नॉट टेक अननेसेसरी टेंशन इवन व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड अप टू द मार्क. बेफालतू की टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा. एक दिन पहले अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो दैट विल श्योरली हेल्प यू. अगर आप अप टू द मार्क प्रिपेयर नहीं, अगर आपको लगता है कि आप पूरा प्रिपेयर नहीं है, फिर भी कुछ नहीं होगा. कीप योरसेल्फ काम and do not study much on that day, and avoid talking to people who bring negativity in your thoughts. ऐसे लोगों से बात ना करें जो कि आपको बोले कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, कैसे होगा ये सब. दिस विल only bring negativity in your thoughts. Avoid talking to such people and have a nutritious diet, and that is very important. And forget about your previous marks, whether they are good or bad. हम ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है पेपर्स में, जो बोर्ड के पेपर होता है, स्कूल के पेपर में, फिर भी अपने प्रीवियस मार्क्स को ज्यादा वैल्यू ना दे. अगर गुड है तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि अभी भी मेरे अच्छे आएंगे, रियलिटी में बिलीव करें. और बैड है तो अगर आपके मार्क्स पहले अच्छे नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी भी अच्छे नहीं आएंगे. एज आई सेड, बिलीव इन रियलिटी and keep your stationery kit and exam pad ready before the exam day to avoid last minute hassle. सब कुछ अपने किट, एग्जाम पैड वगैरह सब कुछ रेडी रखे, लास्ट मिनट कुछ भी chaos को अवॉइड करने के लिए. एंड टेक अ साउंड स्लीप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली ऑन एग्जाम डे, मॉर्निंग में स्टडी ना करें, एक दिन पहले भी ना करें, लेकिन मॉर्निंग में भी बुक्स लेके ना बैठे, इससे कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी. एंड कीप योरसेल्फ फ्रेश, be lively and have breakfast before your exam. This is surely very important. And sit in the examination room with a positive mindset. ये मत सोचे कि पेपर कैसा होगा, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, ये सब ने पॉजिटिव रहे, ज्यादा इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचे. और डू नॉट पैनिक आफ्टर सीइंग द पेपर एंड डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस आइदर. पेपर जैसा भी हो उसे 3-4 बार पढ़े. अगर आपको सारी चीजें आती है तो बहुत अच्छा है, बट इस ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी क्वेश्चंस रह जाते हैं, हम कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ये अवॉइड करें. और पैनिक करने से भी कुछ नहीं होगा. जो चीजें आती हैं पहले उसे अच्छे से करें, और डिफिकल्ट थिंग्स बाद में टाइम छोड़े उन्हें सोचने के लिए. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है अच्छे से तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स रिलेट कर जाएंगे, तो पैनिक ना करें. एंड मैनेजिंग टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. always have 20-30 minutes your hand to revise the paper. Last minute chaos नहीं होना चाहिए. बहुत लोगों के साथ फिजिक्स के पेपर में हो जाता है, बट रिवीजन इज इक्वली इम्पोर्टेंट. अगर आपको चीजें आती हैं रिवीजन में, वो जो चीज आपको आती है वो सही करने का टाइम होता है. जो चीज नहीं आती वो तो नहीं आती, लेकिन जो आता है कम से कम उसे तो 100% करेक्ट करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट. एंड ट्राई फिनिशिंग द पेपर 15-20 minutes before time, as I mentioned. And revising the paper is very important. So this is all. Thank you. All the best, everyone. Thank you, Sanskriti. I must say it was very crisp and very to the point.
So that's great. Thank you. These are good guidelines that you've given to all the students present here. Next, I would like to call upon Mr. Anant, who is the topper from St. Thomas, Indrapuram. So Anant, you may unmute yourself and share your screen now. Yes. Is the screen visible? Yes, it is. Good afternoon to everyone present. My name is Anand and I am a former student of St. Thomas School, Indrapuram. I am currently pursuing BTech in Computer Science Engineering from JSS Academy of Technical Institution, Noida. Now, these are all the subjects which I had in my 12th: physics, chemistry, maths, English, and computer science. In this webinar, we are going to discuss on these points: when, where, what, how. Now, you must be wondering what are these points. We'll discuss when I'll further on move on to the next slide. First, let's take us when. When to study. As we all know that you will be having your boards in May. So I suppose that all of you are already preparing for your boards. But some of you may have not started preparing for the boards, thinking that only 1 month before we'll start to prepare and we'll finish it. But for you, I'll tell you कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे boards कहीं मायने नहीं रखते. Boards के marks भी, if you score more than 92%, then you can take admission in King's Cross College in London, which is a very renowned college. Also, if you are a topper of your science stream boards, then you can also take admission in BITS Pilani. They'll give you any choice, any stream of your choice if you are a board topper. So if you have started your preparation, then well and good. If you have not, then you should start from now onwards. The time you have now, once it is lost, then you won't be able to rewind it back. And you will not be knowing how fast the next coming months will pass. So it's better to start today than to pend it to the next day. Next, from where to study. These are some sources from where I studied in my 12th NCERT textbooks. Before that, the question arises where to begin the preparations from. The simple answer is to utilize the things which are present with you. Now we'll take one by one. First, NCERT textbooks. Use the NCERT textbooks because they are self-sufficient in themselves. Then you can go for NCERT exemplars as well as previous year question paper books, because you get 1 to 2 questions from either NCERT exemplars or either from previous year papers. You can also go for ULIKE papers. You can get it anywhere in the stores. If you want any reference book, then I will suggest you to take SL Arora and DC Pandey for physics. Then we have Pradeep and Modern ABC for chemistry. As far as mathematics goes, you really do not need anything except NCERT and exemplar. For English and computer science, the textbooks which are provided by your school will be sufficient for you, and the notes which are provided by your teachers are also sufficient. Then let's talk about physics. Oh, before that, our next topic has come: what to study. In this, we'll talk about all the subjects one by one, that how you have to prepare for your boards. First comes physics. For physics, first have a thorough reading of your textbook, NCERT textbooks. Go through as many as numericals as possible, including in-text solved examples. You may not know, but you may get a solved example in your paper, which is already present in your NCERT textbooks. Revise and practice each and every question topic, including every diagram and derivation associated with it. पेपर में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डेरिवेशन के साथ डायग्राम भी है, तो एग्जामिनर आपकी डेरिवेशन से पहले डायग्राम पे जाएगा. अगर आपका डायग्राम सही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डेरिवेशन भी देखे, वो सीधा डायग्राम को टिक करके आपको फुल मार्क्स दे देगा. सो इट्स बेटर टू मेक अ क्लीन एंड नीट डायग्राम in every derivation or wherever it is necessary. Try to understand every topic and revise the topics again and again which you find difficult until you have a better understanding of that topic. Then comes chemistry.
Chemistry is divided into three parts: physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. First, physical chemistry. Just focus on your NCERT textbooks and note provided by the teacher. अब फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको वैसे न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यू मे गेट 1 to 3 MCQs from in-text questions. So it is very necessary to have a thorough reading of your NCERT textbooks. Practice previous year questions as much as possible. Then we have inorganic chemistry. Strictly stick with the NCERT because questions will only be asked from it. Try to make notes in your own language so as to have the better understanding of the topics. The best way to prepare inorganic chemistry is to memorize it daily in small portions, from the name of the compounds to their respective chemical reactions. This topic is just on how good you are at memorizing. Then we have organic chemistry. This topic is actually very vast as compared to others. It requires practice as well as memorizing things. So here also you require proper notes which plays major role or part in mastering the topics. Practice and remember every reactions, especially name reactions. You may not know, but in paper you may get a question that what is the name of this reaction, or write the reaction associated with this name. You can expect good questions from this topic, so make this topic your priority in revising chemistry. Then mathematics. Do all the NCERT questions as possible. If you find any difficulty in trying to solve it or finding its solution, then first you see the solution, do it yourself, then close the solution, then again do it 2-3 more times so that you get a clear understanding of the topic. And if you get the same question in paper, then you can do it without any disturbance, or you can say without any wastage of time. Then try solving exemplar questions only after you have completed the NCERT questions. Practice as many as sample papers to build up speed and accuracy. You may get one or two questions from NCERT exemplar. So please go through the NCERT exemplar once. Then comes English. Read your textbook for at least 3 to 4 times to understand the text better. Have your own short self-explanatory notes for every chapter, especially poems. If your teacher dictates or gives you notes in class, then please write it in a separate notebook so that you can have it at the last moment. And when you get it the same question, as for example, you get a line from a poem and it's written, elaborate the line. So then you will have it in your mind that ma'am has said this, so I'll write in this. I would advise you to practice one writing skills daily and read the newspaper or any article you find interesting or related to current scenarios to enhance your vocabulary, or as a fact you can add in your writing skills. Don't memorize whole answer, rather remember in points so that you can write it in your own words in the paper. Next is computer science. Computer science. Practice as many papers as possible. You should have a better understanding of code, or to write the code in different cases or scenarios given to you. The syntax which you write should also be correct. Practical knowledge also is necessary and plays a crucial part in this subject. Practical knowledge in the sense, the programs or anything you have done related to this subject on the computers. Also have solve more and more output-based questions. I had C++ in my 12th, so I don't know much about Python, but I suppose you also get output-based questions, so it is also necessary. So that it is also necessary to solve more and more output-based questions so that you can easily do the questions and to
you can easily do the questions and waste less time on these questions, because output based questions require a lot of time to solve. Now, to summarize as a whole, what we should do. After revising all the subjects, you are required to do some sample papers as well as previous year papers that will help you to determine your speed and help you to pinpoint your areas where you lack. Avoid mucking up topics and try to understand the topics which you find difficult, and do it again and again so that you will understand it. Do as many as questions that you can to maximize your efficiency. Revise each and every topic thoroughly for better understanding. Now next, here are some general instructions. Make a study timetable and strictly adhere to it. If you can't strictly adhere to it, then you make a target, specific target, like I have to complete this topics today only, and if I do not complete, then I won't sleep. So definitely you will complete it, because sleep matters. Then don't ignore English subjects. I know students tend to ignore English language, saying that I'll do it at the last. But when you come to the last, then you will forget everything. Then read the question paper carefully, including each and every question, and write what's asked. Don't write unnecessary things, because it gives a bad impression to the examiner. Try to attempt all questions if you don't know the answer of any question. Leave space for it instead of attempting at the last, because the examiner has to check many papers. He won't be switching back and forth to see whether you have written the answer anywhere or not. So it is advised to leave space for those questions which you don't know, and do it at the last while you're revising it again. Next, I'll give you some instructions on how to do as a sample of English paper, how to write the paper. Section A. It is advised to read the questions before reading the passage itself. Try to complete this section at the last. For saving time, start reading the passage in the first 15 minutes provided before the exam starts, and make a dot with pencil near the point where you think is the answer to any of the question. Then comes section B. This is the most time consuming section. So time management is required for this section. Leave at least 1.5 hours for this section. Write format correctly, and as it also carries marks. Section C. This section is relatively easy as compared to the other two. It is advised to start the paper from the literature section and working your way up to the reading section at the very end. For this section, revise questions and try to remember them as a story rather than mucking them up. This will help you to write your own answers. Next comes how to be presentable. It is very necessary for your paper to be presentable, as it creates a good impression on the examiner. If possible, draw a line after every answer, and if not, then at least leave 2-line gap. Draw neat diagram with the help of pencil, so if there is a mistake, you can correct it and label them correctly. Enclose the formulas in a box so that examiner can see it clearly and then move on to the next step. Underline the points which you find important. Either it can be a word or a quote. Have a separate column for rough work, not only in mathematics but other subjects also. It makes your paper appreciable or good to look. Follow a proper procedure of writing every answer stepwise. Try to minimize scribbling as much as possible. And if you write something wrong, then just cut it with 1 line audit, because scribbling not only doesn't look good, but also shows that the writer was confused while writing the content. So it gives a bad impression to the examiner. Thank you for being a patient listener, and all the very best for your exams. Thank you, Anant. Again, a very crisp and to the point address we've observed. So thank you so much, dear students.
You explained your success mantra very, very proficiently, very crisp, and very to the point. And you sounded very mature. I hope our audience has made notes of all the do's and don'ts that you've provided them with. And I wish you all the luck for your future endeavors and hope that you continue working towards your goals with the same determination that you've shown today and in your exams. If we have any questions from the audience, then Shanu ma'am, you can please forward them to me. I'll ask our both toppers. Are there any questions from the audience? In the meantime, Parul ma'am, I would like to ask a couple of questions. Please go ahead, ma'am. Yes. Yeah, you have used the term, mnemonics, or it is mnemonics or something, which are, I suppose, memory tips, wherein you try to remember things with the specific codes or something. Can you just give a couple of examples for that? Ma'am, like in mnemonics, like we do in a periodic table, the first the first group of elements is namingly, we call it Halina ki Rab se Faryad. So it is actually hydrogen, then lithium, then sodium, then potassium, rubidium, Yes. and cesium and francium. Mhm. So if you see the first letters and compare them with the mnemonic, so it will help in memorizing them. So this kind of mnemonics are possible only in chemistry. Like I have also been a science student. That is why I just wanted to highlight this point. But or you can use them in other subjects also. Ma'am, usually in chemistry, we have already made mnemonics. Mhm. They are already previously made by our teachers. Whereas in other subjects, you will have to make them yourself. So Yes, it is ma'am, we have in physics one. In Register, we have B.B. Roy of Great Britain has a very good wife wearing silver and gold necklace. Oh my God. It gives us the values of different resistances. We'll calculate using the color bands. B.B. Roy means black, brown, red, orange, yellow. Great Britain, green, and B is something else, has a very good wife. Good wife, W white, wearing gold and silver. Gold and silver, G and S, is also a color in the band which gives us the tolerance of that resistor. Okay. A similar one, I believe, is used by younger students of the school who learn solar system, all Yes. the planets. It is my very elegant mother just showed us 9 planets. So it's that all the initials of the planets of the solar system in the same order. So I think some we have pre-made and some students make on their own in each of their groups. Mhm. Okay, you all have, specifically mentioned that the NCERT books and exemplar are very good and these are required for the preparation of science subjects. And then you have highlighted, Mukul has given us about H.C. Verma, then you have focused about Pradeep and a couple of more one. What is this you like, Anant? I think you had mentioned it, or one of you had mentioned you like. Yes, ma'am. You like is also a book where you'll get solved papers, unsolved papers, and also solutions, NCRT solutions, Mm-hmm. and various extra questions also of Okay. every chapter. Mm-hmm. That's great. It has been a wonderful, these have been wonderful presentations where you have very, as ma'am said, in a crisp manner, highlighted the points that need to be taken care of while preparing for your board examinations. And yes, science students, normally we see that science scoring is, it is easier also, but then it is very difficult also when it comes to subjects like physics. And good to highlight that the physics paper was as tough as JEE mains or JEE, like you had mentioned it earlier. So one of you had mentioned. So how do you deal further with these, this kind of papers and other things? Mukul, I would like to have an answer from you in this. Ma'am, we can do that only by keeping our concepts very clear. Mm-hmm. Because these questions are solely dependent on those concepts.
So if your basics are strong, if your concepts are strong, you can do any question and it will help, ma'am. Okay, right. Thank you so much, students. Parul ma'am, please announce for the feedback and other forms. Yeah. So you might have observed I've sent a feedback Google form in the chat window. Just copy it and fill it. And also we've circulated the registration form earlier. In case you've not filled that, kindly give us your details for us to send you the e-certificate for the webinar. That's all from my end, from our end actually. Parul ma'am, we have a couple of questions from the We have. participants. Okay. Please go ahead. So there's this question from Riyansh which says that does theoretical part come in subjects like mathematics, like definitions, etc.? Any one of you can pick this question up and answer. Ma'am, actually there is no theoretical part, but since the paper pattern is changing, so we have MCQs and one-liners. Those one-liners can come from those definitions, ma'am, but I would suggest that they are not very much important, and if your concepts are clear, you will be able to do them. It's not it's not something like you should not memorize them. Actually, just reading them and understanding them is absolutely fine. I think those one-liners would come from the theorems that you have in mathematics, maybe. No, ma'am. No? They are not as such. They are they are simple questions. Okay. And they are based on it, but they are not words. Those words are not there. So if you have an understanding, if you know the correct names, so you can do them easily. Okay. Okay, one of the questions I have to you all students, like generally we see a lot of challenge this is faced by science students. Many of my friends faced it that they picked up science in class 11th and 12th and they switched on to some other stream in in their graduation. Just like Sanskriti was mentioning that she picked up economics honors, that was purely out of her interest. But a lot of this has been, people, the automatic questions come to, tumne science kyun liya tha? So what's your take on this? Like how difficult, how has been your experience, you all, to how it is to switch the stream? Like many of they go and study LLB after pursuing science. So how useful or how challenging it becomes later on when you switch to this stream? Anyone? Mukul, Sanskriti, Anand? Yes, ma'am. I think Sanskriti would be the best person to answer this in this panel. Yeah, actually. If I talk of me, as I had economics as the fifth subject, so it was not very difficult for me to switch on it, because they demand you economics plus maths in 12th, and I had both of those subjects, so it was not difficult for me. And even if you are gathering interest in some subject, you can definitely switch to it. And I think doing what you love can yield good results, and what is more important than you being happy? So do what your passion is and what you love to do. Yes. Do we have any other question from the audience now? Yes, we just recently got a question from Ansh, who is willing to ask that how to read NCERT for biology and score a perfect 100. I don't think so. Any biology we have. They all are, I guess, math physics students, right? ECM. So in the next set of webinars, we'll be taking up, let us try to differentiate between science and biology. We have physics and biology both as our speakers have both the subjects. Okay, there is one question that I would like to ask you all, and that is how do practicals contribute and how do you work upon the practical part? Because in board examination, class 12th, you have with science subjects, you have precise practical marks and practicals that are there. So is there any specific preparation that you need to take up for these practical examinations?
Ma'am, for the practicals, I would say that for this year, it is very unclear about practicals because the students have been at homes while the practical requires you to do them. Hmm. So, but in a general, I would say that the practical marks also constitute in the there are 30 marks Yes, uh, in component. 100. So for that, there are separate books for that. So which are told by the teachers at the start of the session. Okay. So you have to read your manual. You have to write in your manual the experiments. You have to read it, and for the viva and for the project you have made, you can you should have the knowledge for that. So for the knowledge, you have to read that manual or the book which was suggested by your teacher, and even NCRT helps you in answering those questions, because those the manual and the NCRT, though they have very different topics, but since the basics are same, they are somewhat related. So if you you have to study the manual so that you can get good marks in the practical. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Mukul. Over to you, Parul ma'am. So that's all from our end. I hope the students might have, taken down the notes of everything that you've told them. And you all three of you sound very matured and very determined. So determination takes you, way ahead than others. So that's something which has been proved. And although we should not stereotype, but we end up stereotyping good students that we see. So right now as teachers, we have observed certain similar traits in all the toppers that we've interacted with. So there is something, and that is not something which is which students are born with. There's something which each one of you has developed in yourself. So it's not that if it's I won't say it's easy. It is difficult, but it's not impossible to develop the traits of becoming the cream of the institute or any place that you are in. So I'm glad to have all three of you in our panel. Thank you for sparing your time and guiding the students here in the audience. So thank you, students, and all the best in anything that you put your eyes on. Thank you. We would soon be ending the meeting, and please copy the link of the feedback form and give us your valuable feedback. Thank you so much. Thank you to you too. It was our pleasure. Though we got this opportunity to tell our fellow mates of how to attempt or how to go for board exams, it was new and refreshing. Yes, thank you.
Thank you, dear all. We'll now